I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am. So if I am audible to you and you are able to see the screen properly, please let me know in the comment box so that I can start. साउंड आ रहा है आपको प्रॉपरली? स्क्रीन दिख रहा है आपको? सबको ज्वाइन करना है, फटाफट आ जाओ. तो we were discussing about the general pharmacology, and in that we have seen absorption. Okay, in the kinetics we have seen the absorption, distribution, okay, absorption we have completed. We have seen the definition of pharmacology. We have seen the important historical points. We have seen the bioavailability. We have seen the absorption. We have seen the different factors affecting the absorption process. We have also seen the, right, yesterday we have seen this part. Yesterday we have seen this. Yesterday we have seen, so mostly weak acidic drugs, जो वीकली एसिडिक ड्रग होते हैं दे आर एब्सॉर्ब फ्रॉम द स्टमक. वीकली बेसिक ड्रग जो होते हैं दे आर एब्सॉर्ब फ्रॉम द, राइट. तो वीकली एसिडिक ड्रग्स से फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, बारबिटूरिक एसिड, एंड दैट दे आर एब्सॉर्ब फ्रॉम द स्टमक. वीकली बेसिक ड्रग्स दे आर एब्सॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, बिकॉज a weakly acidic drug will remain unionized in the acid pH, and weakly basic drug will remain unionized in the basic pH, and that's why, so weakly acidic drug they are absorbed from stomach, weakly basic drug they are absorbed from the intestine, and from the intestine most of the drugs they are absorbed, right. So we have also seen how you can calculate the percentage of drug ionized or unionized. So Anderson-Hasselbalch equation is important. We have seen Anderson-Hasselbalch equation. Anderson-Hasselbalch equation important है, वो देखा है अपन ने. So we have seen percentage ionized or percentage drug ionized or unionized. So that can be calculated by using the simple table. So you have to remember, you have to memorize, you have to understand this table. So such kind of questions they used to ask. If pH, okay, if pK of morphine is this, and calculate the percentage of ionized or unionized percentage. So in that case you just have to minus pKa from pH. So pH minus pKa values, so they might come from either -3, -2, -1. okay? Most of the time pH minus pKa का वैल्यू -3 होगा, या फिर -2 होगा, या फिर -1 होगा, या फिर 0 होगा, या फिर +1, +2, +3 होगा, राइट. तो अगर 0 आता है pH minus pKa वैल्यू, that means 50% drug is unionized and 50% drug is ionized, right. And for -3, -2, -1 we have seen the study session, right. So after that we have seen the factors affecting on the absorption. We have seen the first pass effect, okay? We have seen the first pass effect also, right. So today we'll start the drug distribution. यहाँ पे am I audible you clearly? Are you able to see the screen? यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे. तो ADME, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. Absorption, distribution, metabolism, elimination, they are the four pharmacokinetic properties. Okay, so kinetics means what body does with the drug. That is, a body will absorb, body will distribute, body will metabolize, body will eliminate the drug. So ADME is known as a kinetics, known as a pharmacokinetics. So out of that we have seen the absorption, and next part is the drug distribution. Next part is the drug distribution. So what do you mean by drug distribution? तो एब्सॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड. तो दैट इज नोन एज द एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग. So movement of drug from site of administration to the
systemic circulation known as the absorption. Now what do you mean by distribution? So basically your body is composed of different compartments. आपका जो बॉडी है, बॉडी में आपका जो बॉडी है, your body is made from different compartments. Your body is made by different compartments. So first main compartment is the blood. Blood is a most important compartment of your body. So blood is known as a central compartment of your body, है ना. blood में क्या है, blood is a central compartment of body, right? In the blood, then you have intracellular fluid, and then you have extracellular fluid, you have interstitial fluid. Blood is the central compartment of your body. In the body you have intracellular fluid, then extracellular fluid. Intracellular fluid मतलब whatever fluid is present in the cell, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर है. इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब सेल के बीच में जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, राइट. So ADME means absorption, distribution, metabolism, elimination, known as the pharmacokinetics, and out of that kinetics we have seen the absorption, right. So next part is nothing but the distribution. So what do you mean by distribution? Distribution क्या होता है? Movement of drug within a body compartments. Movement of drug within a body compartments. Movement of drug within a body compartments. Different organs, different tissue, or the site of action. Movement of drug within a body compartment. So your body is having different compartments. जैसे blood is one compartment known as the central compartment of body. Then interstitial fluid is there. Then intracellular fluid is there. Then extracellular fluid is there. And various tissues. So distribution means movement of drug within a body compartment, within a organs, within a tissue, or at the site of action. जहाँ पे वो action दिखाने वाला है. Distribution. Now the drug distribution depends on the various physicochemical properties of drug, है ना. जैसे absorption के लिए factors थे, वैसे ही आपके distribution के लिए distribution of drug depends on the physicochemical properties of drug. So first distribution is dependent on solubility. पहला major factor होता है solubility. So as there was some factors which was affecting on a drug absorption, so likewise that जैसे absorption के लिए factors है, वैसे ही आपके distribution के लिए क्या है, factors है. So distribution of drug depends on the solubility first. Then second is nothing but the your water and oil partition coefficient. So partition coefficient OW coefficient. So solubility, then OW coefficient, then ionization. So factors which governs the distribution. So first is the solubility. So lipid soluble drug अगर है, so lipid soluble drug they are rapidly distributed in the body. Lipid soluble drug, it is a rapidly distributed in the body. Lipid soluble drug rapidly distributed in the body. Then drug having higher water oil partition coefficient, तो जिसका partition coefficient ज़्यादा है, that is a easily distributed. Then ionization, only unionized drug that is a distributed in the body, right, which is a unbound. Then next factor is a plasma protein binding. Plasma protein binding. These are the factors which are the factors responsible for the drug distribution. So they are the factor which are has a impact on the drug distribution. So drug distribution or movement of drug within a various body compartment is dependent on its solubility, its partition coefficient, its ionization, and then pKa dissociation constant,
एंड देन एक्सटेंट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग, है ना। यहाँ पे दीज आर द फैक्टर्स, ओके। पीके लिखता हूं मैं यहाँ पे, पीके मतलब क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। So solubility, partition coefficient, ionization, extent of protein binding, that is a plasma protein binding, and dissociation constant, that is a pKa. So these are the factors which affect the distribution, right? So these are the factors which affect. So drug distribution depends on basically these factors. Lipid soluble drug, that is a absorb, okay. Drug having higher partition coefficient, that is a rapidly distributed. Unionized drug is rapidly distributed. Ionized drug will bind to plasma protein. The extent of plasma protein binding, बहुत ही ज्यादा अगर ड्रग कोई प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड करता है, so drug it binds to a plasma protein. So extent of plasma protein, so if drug is binding to a plasma protein at a higher extent, अगर कोई ड्रग बहुत ही ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करता है, so that drug will remain in the central compartment. अगर बहुत ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंडिंग अगर इसी ड्रग का है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो ड्रग कहाँ पे, प्लाज्मा में, बाकी टिश्यूज में नहीं गया है, राइट। एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ड्रग, सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन, बट ओके। एंड देयर इज वन मोर टर्म नोन एज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज अ वन मोर टर्म नोन एज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन, और एक टर्म है रीडिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, सो दोज ड्रग व्हिच आर लिपिड सोल्यूबल, those drug which are highly lipid soluble, initially they are distributed into highly perfused organ. तो क्या होता है कि those which are highly lipid soluble drug, they are distributed initially at a highly perfused organ. तो highly perfused organ कौन होते हैं, आपका हार्ट होता है, आपका लिवर होता है, आपका लंग्स होता है. So initially they are distributed at a highly perfused organ, but later on they are accumulated into the adipose tissue, which is a poorly perfused organ, right. Suppose that उनका साइट ऑफ एक्शन है हार्ट, तो वहां पे क्या होगा, बाद में फिर से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज नोन एज द रीडिस्ट्रीब्यूशन, राइट. दैट इज नोन एज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग. तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द सोल्युबिलिटी. सबसे पहले सोल्युबिलिटी, लिपिड सोल्युबल ड्रग, then partition coefficient, okay, then extent of ionization, fourth factor is the extent of protein binding, and fourth factor is the dissociation constant. तो protein binding में है ना, तो remember acidic drugs binds to albumin. So acidic drug binds to albumin plasma protein, and then basic drug binds to alpha acid glycoprotein. So acidic drug binds to albumin and basic drug binds to alpha acid glycoprotein. Now, right, so that is a important instruction about the distribution, है ना. Now physiological barrier for the distribution of drug. Physiological barrier, तो हर एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. सो देर आर सम बैरियर. आपको किसी के घर में जाना है तो वहाँ पे दरवाजा होता है, आपको किसी के घर में जाना है तो वहाँ तो गेट होता है. तो बैरियर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन. तो देर आर टू इंपॉर्टेंट बैरियर, एंड देन देर आर सम सेपरेट बैरियर्स ऑल्सो. तो सबसे पहले होता है सिंपल कैपिलरी बैरियर, simple capillary endothelial barrier. So actually it is not a barrier. Free drug ionized or unionized molecular weight having 600 dalton. So it is a simple barrier. ये क्या होता है, एक endothelial cell का एक layer होता है, simple capillary barrier. So blood vessel का capillary endothelial cell का barrier. So free drugs or ionized or unionized drug having less than 600 dalton, they can easily diffuse through this barrier, capillary endothelium. Practically speaking, it is not a kind of barrier. ये क्या कुछ barrier नहीं होता, but just a simple epithelial cell का layer होता है. Then after that, simple cell
simple cell membrane barrier. Simple cell membrane. So it is similar to lipid bilayer. Simple cell membrane barrier is like a lipid bilayer, है ना, जैसे cell membrane होता है वैसे. Then there are some special barriers, है ना, there are some special barriers जैसे blood brain barrier. There are some special barriers like blood brain barrier. Blood brain barrier. So then blood brain barrier, then blood placental barrier. Blood placental barrier. We are going to see it in detail. Blood placental barrier, blood brain barrier, blood CSF barrier, and then blood testis barrier. So we are going to see the barriers in the detail in upcoming slides. But आपको ये मालूम चाहिए. So these are barrier which prevents the drug to be reaching into a particular tissue. जैसे आपका blood testis barrier है, तो वो blood testis barrier क्या करेगा? So it will prevent a drug to reach into a testis. That's why blood testing barrier. So barrier are nothing but the, ये क्या होते हैं? ये epithelial cells होते हैं. Epithelial cells का कुछ tightly joined epithelial cells का layer होता है. So they are known as the physiological barriers, right? They are known as the physiological barriers. Right? So before that we will see. So distribution. Before that we will see distribution. Okay, very important question, बहुत बार आ चुका है इसके ऊपर. Distribution of drug in a different body compartments. So different body compartment कितने होते हैं और कौन से ड्रग कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर. Distribution of drugs in a different body compartment. Distribution of drug in different body compartment. So what are the different compartments and what kind of drug they are distributed in that compartment. ठीक है, तो देखो यहाँ पे. So different body compartment and types of drugs distributed. जैसे one of the compartment of your body is a total body water. आपके बॉडी में total body water जो होता है. Distribution of drug in a different body compartment. So first is nothing but the total body water. आपके बॉडी में total body water कितना होता है? Around 20 liters. So around 20 liters of blood, around 20 liters of water is there. So total body water. So in the total body water कौन से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? तो टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टोटल बॉडी वाटर, स्मॉल molecular weight drug, water soluble drug. Small molecular weight water soluble drug such as alcohol, antipyrine. तो आप बोलेंगे सर अल्कोहल ड्रग है क्या? अल्कोहल इज आल्सो ड्रग. So alcohol, antipyrine, they are the small molecular weight water soluble drug which are distributed in the total body water. देखो जो अल्कोहल एडिक्ट होता है उसके स्किन का भी स्मेल अल्कोहल का आता है. उसका पसीना जो होता है, उसका स्वेट जो होता है, उसमें भी अल्कोहल पाया जाता है. मतलब उसके ब्रीदिंग में भी अल्कोहल है, उसके ब्लड में भी अल्कोहल है, उसके सीएसएफ में भी अल्कोहल है, उसके हर एक टिश्यू फ्लूइड में अल्कोहल है. बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट? So alcohol and antipyrine they are distributed in the total body water. Remember, है ना, क्वेश्चन आता है आपको. Then second is the extracellular space. Extracellular space. So second compartment extracellular space. Extra मतलब क्या? Extra मतलब outside. Cellular space मतलब सेल के outside जो space है. So in that large water soluble molecules such as the mannitol, large water soluble molecule such as the mannitol. So mannitol is distributed in the extracellular space. ठीक है, तो टोटल बॉडी वाटर में एंटीपायरिन अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, mannitol होता है एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में. देन इंट्रावेस्कुलर स्पेस. इंट्रावेस्कुलर स्पेस मतलब क्या? इंट्रावेस्कुलर स्पेस मतलब आपका ब्लड आता है. इंट्रावेस्कुलर स्पेस मतलब ब्लड. वेसल मतलब क्या होता है? वेसल मतलब ब्लड वेसल. तो इंट्रावेस्कुलर ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है भाई? ब्लड होता है. तो इन द इंट्रावेस्कुलर स्पेस व्हाट काइंड ऑफ ड्रग आर देयर? वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्ग, वेरी लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल एंड स्ट्रॉन्ग प्रोटीन बाउंड मॉलिक्यूल. जो प्रोटीन को बाउंड करता है वो कहाँ पे रहेगा? वो रहेगा इंट्रावेस्कुलर स्पेस में.
जो प्रोटीन को बाइंड करेगा वो रहेगा आपके ब्लड में, राइट। सो एग्जांपल इज हिपेरिन, डायजेपाम, यहाँ पे हिपेरिन भी होता है, डायजेपाम भी होता है, देन वारफेरिन, है ना। सो दोज ड्रग्स व्हिच विल बाइंड टू ए प्लाज्मा प्रोटीन्स दे विल रिमेन इन द ब्लड। अगर प्लाज्मा प्रोटीन मतलब क्या, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है उसको ही अपन प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। तो अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, बाइंडिंग करता है, तो वो ड्रग कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, तो दैट ड्रग विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द ब्लड, दैट इज अ इंट्रावेस्कुलर स्पेस। तो वेरी large molecule, strong molecule, ionized molecule which has a protein binding, so they will reside, they will stay in the central compartment known as the blood, ठीक है। तो drug like heparin, warfarin, then diazepam, they will remain in the blood, okay। then some drugs will be distributed into body fat, some drugs will be distributed into body fat। तो body fat में कौन जाता है भाई, so highly lipophilic drug, so highly lipid soluble drug, highly lipid soluble drug like फॉर एग्जाम्पल DDT ये एक पेस्टिसाइड होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स एंड थायोपेंटोन। तो ऑल द लिपिड सोल्यूबल ड्रग, तो हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग दे विल गो इनटू द बॉडी फैट। बॉडी फैट मतलब क्या, एडिपोज टिश्यू, it will act as a depot and they will go and they will remain in the lipid because they are highly lipid soluble drug. So highly lipid soluble drug they will concentrate into the adipose tissue. Some drugs will also go and bind to a bone. So question इसके ऊपर आ चुका है, which kind of drug binds to bone? So particularly fluoride, lead, metal ions having drugs, जिसमें metal ion है, जिसमें fluoride है, जिसमें fluorine है, fluorine. So fluorine and lead that binds to bones or that will go into bones. So in the body fat, lipid soluble molecule goes in the intravascular space or blood. So drug which binds to plasma protein they will reside on the blood, and then extravascular space में for example mannitol, total body water में आता है आपका antipyreneal alcohol, antipyreneal alcohol. Remember this antipyrine is a highly water soluble drug and it is used to measure the total body water. Antipyrine is a drug used to measure the total body water. तो antipyrine किसके लिए यूज होता है, total body water के लिए। तो antipyrine is a highly water soluble molecule used to measure the total body water, और है ना, आपकी बॉडी में टोटल बॉडी में वाटर कितना है वो मेजर करने के लिए antipyrine यूज करते हैं। क्यों, बिकॉज antipyrine is a water soluble and it is distributed in the total body water, that's why, okay। So these are the distribution of drugs in a different body compartment. I hope I am getting you. I hope I am audible to you. You are able to see the screen. You know. Next. So what do you mean by volume of distribution? So what do you mean by volume of distribution? What do you mean by volume of distribution? What do you mean by volume of distribution? तो volume of distribution क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, VD means volume of distribution. So VD is nothing but the hypothetical volume of body fluids. What is that? Volume of distribution is nothing but the hypothetical volume of body fluid containing a drug. जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, ब्लड में ड्रग है आपका, सो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है ना, वॉल्यूम ऑफ इट इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड हैविंग ड्रग, दैट इज नोन एज अ ड्रग, दैट इज नोन एज अ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन आ चुका है, डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ ड्रग कंटेनिंग बॉडी, ओके, हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग ड्रग। तो मतलब आपकी बॉडी में फ्लूइड है ना, से ब्लड है आपका, लिम्फेटिक फ्लूइड है आपका, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है आपका, इंटरसेलुलर फ्लूइड है, तो वो फ्लूइड में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि बॉडी के फ्लूइड में ड्रग कितना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट द इट इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग ए ड्रग, नोन एज अ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, देखो, VD इज इक्वल टू, है ना,
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू VD is equal to वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू है ना टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. सो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर आपने एक ड्रग ले लिया, से फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल, से फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल. तो पैरासिटामोल, इफ यू टेक अ पैरासिटामोल 100 mg, सॉरी इफ यू टेक अ पैरासिटामोल 1000 mg, है ना, तो डोज कितना है उसका, डोज है आपका 1000 mg. तो सपोज देयर इज अ 1000 mg ऑफ पैरासिटामोल इन द ब्लड, there is a 1000 mg paracetamol in the blood, means 1 gram of paracetamol in the blood, and if you take a plasma, अपने blood withdraw किया, and if you measure the paracetamol concentration, and if paracetamol concentration in the blood comes 50 milligram per liter, है ना, आपने एक सैंपल विड्रॉ करके चेक किया कि 50 mg पर लीटर आए, तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, दैट इज 1000 milligram divided by plasma drug concentration, that is 50, it will come to 20 liter. Okay, it will come to 20 liter. And in GPAT 2021, GPAT 2021 में एक क्वेश्चन आया था, GPAT 2021 में एक क्वेश्चन आया था. तो if the dose of drug is 500 milligram, वहाँ पे 500 milligram डोज दिया था. If the dose of drug is 500 milligram, if the dose of drug is 500 milligram and plasma drug concentration is 25 mg, if the dose of drug is 500 milligram and dose of drug is 500 milligram and plasma drug concentration is 25 mg per liter, calculate the volume of distribution. तो 500 by 25 करेंगे आप, तो इतना आएगा 20 लीटर्स, है ना, 25 liters आएगा. So like this. So my point being, what is volume of distribution? Volume of distribution is nothing but the amount of drug in the body divided by plasma drug concentration. And definition क्या है volume of distribution का? It is nothing but the hypothetical volume containing body fluid, right? Containing body fluids. So next आता है आपका blood brain barrier. So blood brain barrier, triple B. So whatever drugs in a blood, they will not enter into the brain. whatever drugs you are taking, that will go into the blood. आपने ड्रग ले लिया, वो ब्लड में एब्सॉर्ब होगा, ब्लड में जाएगा, वो आपसे डिस्ट्रीब्यूट होके वेरियस बॉडी टिश्यू को जाएगा. बट whatever drug you are taking will not enter into the brain. हर एक आप जो ड्रग ले रहे हो वो ब्रेन में जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है. It is not compulsory that drug you are taking will go into the brain, because brain is having barrier for the distribution known as a blood brain barrier. So blood brain barrier कैसे बनता है? Blood brain barrier is made from a brain capillaries. Blood brain barrier is made from blood capillaries of endothelial cell, So it is a capillary network of endothelial cells which are joined together by continuous tight intracellular junction, and it is known as a blood brain barrier. Blood brain barrier मतलब क्या कि ब्रेन के ऊपर एक ऐसा टाइट जंक्शन अवेलेबल है. टाइट जंक्शन मतलब क्या? देयर इज अ लेयर ऑफ endothelial cells, capillary layer of endothelial cells which are joined together. मतलब वहाँ पे इंट्रा है ना, उसमें पैरासेलुलर स्पेस नहीं है, उसमें पैरासेलुलर स्पेस नहीं, मतलब दो सेल के बीच में गैप नहीं है वहाँ पे. ब्रेन कैपिलरी कंसिस्ट ऑफ एंडोथेलियल सेल्स which are joined together by continuous tight intracellular junction known as a blood brain barrier, right? Now blood brain barrier में है ना, so whatever you are taking, so that will not enter into a brain. आपने जितने भी ड्रग ले लिए उसमें के सब कुछ ब्रेन में नहीं जाएंगे. Now that
डिपेंड्स ऑन द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग. सो ओनली यहाँ पे याद रखना है, ओनली लिपोफिलिक ड्रग, ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग, only lipid soluble drug, only lipid soluble drug will get into the brain, because यहाँ पे lipid soluble drug brain में entry कर जाएंगे. So all lipid soluble drug will go into the brain and they will exert their action. Okay, so lipid soluble drug they gets entry into the brain. Now blood brain barrier or this capillary endothelial tight junction is absent. Blood brain barrier is absent at a pituitary gland. It is absent at the pituitary gland, area posterma, then median hypothalamic emanations and CTZ. So blood brain barrier is absent at these things. Blood brain barrier सभी brain के ऊपर covering होता है. So everything in the brain will not enter. So each and everything will not enter into brain. So ब्लड ब्रेन बैरियर रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ ड्रग्स इन द ब्रेन, है ना. तो बैरियर क्यों होता है, आपके घर में गेट क्यों लगाते हो आप कि कोई भी जानवर आपके घर में ना आ जाए, इसलिए गेट लगा के रखा है आपने. तो वैसे योर ब्रेन, योर टेस्टिस, योर प्लासेंटा एज अ बैरियर्स मेड फ्रॉम अ कैपिलरीज, बैरियर्स मेड फ्रॉम अ सेल टाइट सेल लेयर जंक्शन एपिथेलियल सेल्स, राइट. तो ब्लड ब्रेन बैरियर इज एब्सेंट एट अ 4 प्लेसेस, ये 4 जगह पे एब्सेंट होता है. सो फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है. इन द एरिया पोस्टरमा ऑफ ब्रेन देयर इज एब्सेंस ऑफ बीबीबी. इन द मीडियन हाइपोथैलेमिक इमिनेशंस देयर इज एब्सेंस ऑफ बीबीबी एंड इन द केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन CTZ. सो देयर ओके, सो दिस BBB is absent at these 4 places, है ना. So in these places, okay, and blood, okay, in the blood brain barrier a lipid soluble drug can easily cross the blood brain barrier. Lipid soluble drug will get entry into the brain. Brain में lipid soluble drug क्यों आता है, because brain जो है ना, brain, your brain is made from a lipids. Your brain is made from a lipids. तो आपका ब्रेन क्या है, पूरा लिपिड है. So your brain is lipid, so that's why lipid soluble drug easily gets entry into the brain. Okay, but blood brain barrier is absent at certain places: pituitary gland, area posterma, median hypothalamic emanations and आपका chemoreceptor trigger zone. तो ये 4 जगह पे ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Right? Now sedative, hypnotic, anti-convulsant, anesthetic drug. ये जो सेडेटिव मतलब क्या है, नींद की दवाई. सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी कन्वर्जेंट, एनेस्थेटिक ड्रग. सो ऑल दे आर द लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स. दे कैन इजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर बिकॉज ऑफ देयर हाईली लिपिड सोल्यूबल नेचर. जिसका लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो इजीली क्रॉस करता है ना. वाटर सोल्यूबल ड्रग है ना, वाटर सोल्यूबल ड्रग तो हाईली, ओके, high molecular weight, water soluble drug. High molecular weight water soluble drug will not enter into the brain. ये ब्रेन में नहीं जाता. High molecular weight water soluble drug will not enter into brain. Okay, and that's why जैसे एंटीबायोटिक लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है ना, या फिर बाकी आपके एंटीबायोटिक्स है. सो दे विल नॉट गो इनसाइड द ब्रेन बिकॉज दे आर हाईली वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल एंड दे आर हैविंग लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, राइट. बट इन केस ऑफ, है ना, जब आपको कोई, बट इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस मतलब क्या होता है, इट इज अ इन्फेक्शन ऑफ योर लेयर्स ऑफ ब्रेन. सो इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस व्हाट हैपेंस, योर ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना आपका वो कमजोर हो जाता है. इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस, इन केस ऑफ इन्फेक्शन, इन केस ऑफ वायरल एन्सेफेलाइटिस, योर ब्लड ब्रेन बैरियर बिकम्स वीक. ओके, इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस, इन केस ऑफ एन्सेफेलाइटिस, योर ब्लड ब्रेन बैरियर गेट्स वीक हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई नाउ दिस वाटर सोल्यूबल ड्रग आल्सो कैन गेट एंट्री इनटू द ब्रेन.
This water soluble drug also streptomycin can get entry into the blood, है ना. Normally blood brain barrier brain के ऊपर होता है, brain के covering होता है, so everything जो भी drugs है वो आपके brain में नहीं जाएंगे because blood brain barrier वहाँ पे available है. So only lipid soluble molecules they are allowed to go in the brain, okay. But sometimes you need a water soluble molecule to reach at a brain. कभी कभी क्या लगता है कि वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल भी आपको ब्रेन तक जाना चाहिए, जैसे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर इन्फेक्शन, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, हमें ब्रेन में वाटर सोल्यूबल ड्रग भी भेजना है आपको. सो एट दैट टाइम वाटर सोल्यूबल ड्रग विल नॉट गो, ओके, विल नॉट गो इन द ब्रेन. बट ड्रग कब भेजते हो आप, तो आपको कोई दिक्कत है तभी, है ना. सपोज यू गॉट अ मेनिंजाइटिस, आपको मेनिंजाइटिस हो गया. मेनिंजाइटिस मतलब क्या है, इन्फेक्शन ऑफ लेयर्स ऑफ ब्रेन. सो इफ यू गॉट अ मेनिंजाइटिस, वहां पे एंटीबायोटिक भेजना जरूरी है ना. सो एंटीबायोटिक शुड रीच एट अ ब्रेन, देन ओनली मेनिंजाइटिस कैन बी रिलीव्ड. सो बट एंटीबायोटिक्स आर वाटर सोल्यूबल, जैसे पेनिसिलिन हो गया या फिर आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया. सो दिस स्ट्रेप्टोमाइसिन पेनिसिलिन विल नॉट गेट एंट्री इनटू द ब्रेन बिकॉज ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, बट बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ब्लड ब्रेन बैरियर गेट वीक. इन्फेक्शन के कारण ब्लड ब्रेन बैरियर वीक हो जाता है, and now water soluble drugs like streptomycin, penicillin, they can get entry into the brain and they will relieve your infection, right. So right, normally a sedative, hypnotic, anticonvulsant, anesthetic drug, so these kind of drugs they are highly lipid soluble drug, lipophilic drug, and they get entry into the brain. But you know, but okay, now to increase the permeation across the BBB, ये इंपॉर्टेंट है. देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इसके ऊपर. नाउ वाटर सोल्यूबल ड्रग दे विल नॉट गेट एंट्री इनटू द ब्रेन, ओके, अनलेस देयर इज डैमेज टू बीबीबी. बट टू एनहांस द पेनिट्रेशन इन द ब्रेन, टू एनहांस द एंट्री ऑफ वाटर सोल्यूबल ड्रग इन द ब्रेन, तो पेनिट्रेशन एनहांसर आर यूज्ड. पेनिट्रेशन एनहांसर मतलब क्या, so that will help a water soluble drug to penetrate into the brain, तो ब्रेन तक जाने के लिए हेल्प करेगा, उसको बोलते हैं अपन पेनिट्रेशन एनहांसर. एंड द एग्जांपल इज नथिंग बट द DMSO. द एग्जांपल ऑफ दिस पेनिट्रेशन एनहांसर इज नथिंग बट द DMSO. DMSO क्या है, डायमिथाइल सल्फोक्साइड. तो DMSO इज यूज्ड एज अ पेनिट्रेशन एनहांसर टू रीच ए वाटर सोल्यूबल ड्रग इनटू द ब्लड. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज DMSO, penetration enhancer, याद रखना है आपको. Now so again, so mannitol is also used which can disrupt the, है ना. इसके ऊपर और एक क्वेश्चन आया. So DMSO is used as a penetration enhancer, एक क्वेश्चन ये आया है. DMSO is used as a penetration enhancer, एक क्वेश्चन ये आ चुका है. दूसरा क्वेश्चन आया है, what is the mechanism of DMSO, what is the mechanism of DMSO to enhance the penetration across the BBB. तो DMSO क्या करता है, DMSO will cause protein precipitation. DMSO क्या करता है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर में जो प्रोटीन्स है उसको क्या करता है, प्रेसिपिटेट कर देता है. इट विल प्रेसिपिटेट द blood brain barrier protein, and that's why a water soluble drug may get entry into the brain. So DMSO is used as a penetration enhancer and it act by protein precipitation. ये क्वेश्चन GPAT में आ चुका है. तो सेकंड क्वेश्चन, तो DMSO के ऊपर ही दो क्वेश्चन आ चुके हैं. देन मैनिटोल क्या करता है, इट विल डिस्टर्ब द ब्लड ब्रेन बैरियर. तो मैनिटोल इज आल्सो यूज्ड एज अ पेनिट्रेशन एनहांसर व्हिच विल डिस्टर्ब द BBB. And there is one more technique to get entry of drug into the brain, and one more technique is there known as the dihydropyrimidine redox system. So dihydropyrimidine redox system, so they are a drug carrier for the brain. So DMSO, mannitol and dihydropyrimidine, right? These three things, they increases the penetration of water soluble drug into the brain, right? Now blood CSF barrier भी है. देखो blood CSF barrier is exactly like a blood brain barrier. Blood CSF barrier is exactly like a blood brain barrier.
है ना. But blood cell barrier is formed by capillaries of lateral third and fourth ventricle, capillary endothelium of a choroid plexus. Blood cell barrier is formed by the capillary network of lateral third ventricle and fourth ventricle, capillary endothelium in the choroid plexus. है ना. तो यहाँ पे इसके choroid plexus के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है. What is the choroid plexus? It is a capillary network present in the ventricles. Capillary network present in the ventricles. ऊपर क्वेश्चन आया है, capillary network present in the ventricles is known as the choroid plexus. And यहाँ पे capillaries है ना, blood cell barrier is nothing but the network of a capillary plexus of a third lateral ventricle and fourth ventricle. Okay, so blood cell barrier is similar to blood vein barrier. वहाँ पे भी lipid soluble drug जाएंगे. So there is entry of lipid soluble drug in the blood cell barrier. And remember, अगर water soluble drug का entry अगर होगा in case if there is entry of water soluble drug, so then these barriers also has some pumps. These barriers also has some efflux pumps. इफ्लक्स पंप मतलब क्या, ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल अंदर आया उसको बाहर फेंकने का काम करते हैं. So these barriers, these tissues also has a efflux pump. So if in case any by chance if there is entry of water soluble molecule, that will be removed from this, okay, this tissue. So known as a, okay, blood vein barrier, blood cell barrier. You can see, right. तो ये सब मान लीजिए ब्लड है आपका, दिस इज अ ब्लड कंपार्टमेंट. ओके, दे आर नथिंग बट द एंडोथेलियल सेल. So these purple cells are nothing but the endothelial cell. These purples are nothing but the endothelial cell. These purple cells are nothing but, you can see in these two cells there is a no gap. So there is a tight joining of these cells. There is a tightly joining of cells, and further this barrier, okay, this tight junction of endothelial cells, they are also covered by nerve cell. They are also covered by nerve cell. इसके ऊपर nerve cell भी है. They are also covered by nerve cell or pericyte or glial cell. So that's why there is a tight junction between endothelial cells of the brain, and that's why this is known as a blood vein barrier. Okay, blood vein barrier. So you can see over here, यहाँ पे देखो usual capillary barrier, normal capillary barrier क्या होता है, usual capillary barrier. So there is a, okay, so you can see over here in this diagram endothelial cells, they are there, but in between the cell there is a gap. In between the cell there is a gap. Normally endothelial cell का barrier क्या होता है, उसमें कुछ gaps होते हैं. Normally endothelial cell barrier has a gap, and through that gap a lipid soluble polar molecule they used to cross, and a lipid soluble non-polar molecule they used to also get entry into the normal capillary barrier. Normally capillary barrier में क्या होता है, there is a junction of there is a endothelial cell layer, but in between these cells there is a gap. Through that gap polar molecules get entered, and in between cell there is entry of lipid soluble molecule. Normally endothelial cell का normal usual capillary barrier से दोनों का भी entry होता है, but in case of blood brain barrier, in case of brain capillary barrier, in case of brain capillary barrier, you can see over here, so these endothelial cells are, they are joined tightly. These endothelial cells are tightly joined. These endothelial cells are tightly joined, and there is no space between two cells. यहाँ पे जैसे intracellular space होगा, intracellular pores या space, intracellular pores or space was there in a usual capillary barrier. Normally capillary barrier में intracellular space है, लेकिन यहाँ पे बहुत tightly they are joined and there is no intracellular space. So that's why a
a lipid insoluble मतलब water soluble drug and polar drug they cannot cross, and again above this there is again glial cell or nerve cell. Why water soluble drugs or why large molecular drugs they are not getting entry into the blood brain barrier? ये क्यों आता है? ब्लड ब्रेन बैरियर आपके ब्रेन में क्यों है? ब्लड ब्रेन बैरियर आपके बॉडी में इसलिए है ताकि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जा सके. व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर? टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइन टिश्यू, टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइन टिश्यू. So for the protection of brain you have blood brain barrier. So whatever, okay, so everything cannot get entered into the brain. There is one gate, है ना, जिसको जाने देना है, जिसको नहीं जाने देना है, वो डिसाइड करता है ये बैरियर एंड फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग. So only lipid soluble molecule and non-polar molecules they will get entry into the brain. Only lipophilic drug, non-polar drug they get entered into brain. Water soluble drug or lipid insoluble drug, polar drug, they will not get entry into the brain, right? So that is the difference. I hope you have understood. समझ में आया आपको? Now next is a blood placental barrier. Next one is a blood placental. These are nothing but the barriers for distribution of drug. ये क्या है? Barriers for distribution of drug. So distribution of drug is prevented by this barrier. So to prevent the distribution of drug or to prevent the entry of drug in a particular tissue, you have barriers, right? So next one is a blood brain. So next one is a blood placental barrier. So whenever you are in a womb of your mother, आप जब मम्मी के पेट में होते हो, तो मम्मी के पेट में आप जब होते हो तो आपका और मम्मी का कांटेक्ट कहाँ से होता है? प्लासेंटा से. So you and your mom is connected via placenta, okay? But whatever your moms eat, आपका मॉम जो भी ड्रग्स वगैरह या फिर जो भी न्यूट्रिशन लेती है वो सब आपको मिलता है वाया प्लासेंटा. बट इन द प्लासेंटा देयर इज अ बैरियर दैट नोन एज अ ब्लड प्लासेंटल बैरियर. सो वट एवर योर मम्मी ईट्स विल नॉट बी सप्लाइड टू यू, ओके? सो द बैरियर बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड वेसल्स आर separated by a tissue layer, which is made up of fetal trophoblast. है ना, fetal trophoblast नाम के सेल्स होते, fetal trophoblast नाम के सेल्स होते, they forms a blood placental barrier. fetal trophoblast basement membrane and endothelium that constitute the placental barrier. देखो आप जो भी प्रेग्नेंट वुमन है उसमें जो बच्चा है उनके अंदर, तो दैट फिटस विल नॉट गेट ईच एंड एवरीथिंग वट एवर हर मॉम इट्स, वट एवर हर और हिज मॉम इट्स, बिकॉज देर एग्जिस्ट ए प्लासेंटल बैरियर, देर एग्जिस्ट ए ब्लड प्लासेंटल बैरियर. व्हाट इज दैट? ब्लड प्लासेंटल बैरियर इज मेड फ्रॉम अ फीटल ट्रोपोब्लास्ट सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियल सेल्स, है ना. तो मोस्टली यहाँ पे भी लिपिड सोल्युबल ड्रग एंट्री कर देता है, मोस्टली लिपिड सोल्युबल एंड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाटर सोल्युबल. दैट्स व्हाई ड्रग्स if drugs are taken by pregnant woman that can adversely affect the fetus. जैसे अपन आजकल है अल्कोहल, तो अगर अल्कोहल ले लिया, कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसने अल्कोहल ले लिया, है ना, उसको अल्कोहल पीने की आदत है, तो अल्कोहल पी की हो तो वो बच्चे के लिए भी adversely affect करेगा. That alcohol will reach to a fetus and fetus will become fetus will get a tolerance to the alcohol. प्रेग्नेंट वुमन अगर अल्कोहल का एडिक्शन है तो fetus को भी क्या होगा? अल्कोहल का, है ना, अल्कोहल का टॉलरेंस हो जाएगा, राइट? So because of that alcohol can cross the placental barrier. Lot of drugs like the lipophilic drug, lipid soluble drug also crosses the placental barrier and adversely affect the fetus. That's why there is a teratogenicity. कुछ drugs when they are used in the pregnant woman, they can adversely affect the growth of fetus. ना कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो प्रेग्नेंट वुमन ने ले लिए ना, कुछ ड्रग्स ऐसे कि प्रेग्नेंट वुमन में क्या करते हैं, जब देने के बाद में जो फीटस है, जो बच्चा है, उसको क्या करती है? अफेक्ट करते हैं.
For example, you can see over here, so there is one drug known as a thalidomide. यहाँ पे एक drug है thalidomide. There is one drug known as thalidomide. So it was a drug used in the treatment of morning sickness. तो वो एक drug है thalidomide. So example, there are a lot of drugs which are known as teratogenic drug, but एक drug है आपका thalidomide. Thalidomide, okay, THALI, thalidomide. So that is a teratogenic drug. When it is given to a pregnant woman, when thalidomide is given to a pregnant woman, so for the treatment of morning sickness, pregnancy में क्या है, morning में sickness होता है, vomiting हो रही. So thalidomide when used in the morning sickness in 19th century, ये 19th century में हुआ था ना. So in the 19th century, thalidomide was used for the treatment of morning sickness in the pregnant women. In the pregnant women, 19th century, thalidomide was used in the pregnant woman, and that result in the thousands of birth. That result in the thousands of birth which are having defect. So thalidomide pregnant woman में दिया, तो thalidomide crosses the placenta and causes the growth deficiencies in the fetus. So thalidomide caused the shortening of limbs, short limbs. देखो, so absence of limbs, short limb or absence of limb, it is known as a short limbs or absence of limb, known as a phocomelia. इसको एक टर्म है, देखो, phocomelia. Phocomelia. So phocomelia caused by thalidomide is a example of teratogenic effect. So my point being, so whatever mother eats, that again that depends on the physicochemical properties of drug that may can cross the placental barrier and adversely affect the fetus. So जैसे thalidomide 19th century में यूज किया था for the treatment of morning sickness, and the thalidomide was a sedative drug, and that was caused the thousands of birth which are having defective limbs and or absence of limbs, known as a phocomelia, and that tragedy is known as a thalidomide tragedy. That thalidomide is known as a thalidomide tragedy. That is known as a thalidomide tragedy. यहाँ पे देखो 1993 में 19th century में thalidomide caused thousands of birth which are defective birth, known as a thalidomide tragedy. ठीक है, thalidomide tragedy. ठीक है. Now thalidomide is no more used, and remember thalidomide का, that in the thalidomide there are actually thalidomide is a racemic mixture. Thalidomide में क्या है, racemic mixture है ये drug. In the thalidomide, it is a racemic mixture. Well, thalidomide is a racemic mixture having equal and you have R and S isomer. thalidomide में क्या है, R and S isomer है, R and S isomer. Thalidomide is a racemic mixture having equal amount of R and S isomer. So out of that, R isomer causes the phocomelia. Phocomelia means what? Absence of limbs. So R isomer causes the phocomelia. S isomer is a shape. Well, so it is a racemic mixture, and out of that, R isomer was causing the phocomelia. S isomer is a shape. But nowadays thalidomide is no more used. आजकल thalidomide का यूज ही नहीं करते. क्यों? क्योंकि क्या पता, कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, कर दिया तो पूरा लाइफ खराब हो जाएगा. ठीक है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. अभी जो मैंने इतना 15-20 मिनट बोला है आपको, इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है. इवन GPAT 2023 में भी आया, phocomelia is caused by thalidomide. ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, you can see over here. In case of blood placental barrier, lipid soluble drugs having molecular weight less than 1000 dalton can cross. Example of drug is nothing but the ethanol, sulfur drug, barbiturates, some anesthetic drug, sedative, hypnotic, steroids, analgesic, anticonvulsant, few antibiotic can cross the blood placental barrier by simple division. Okay?
Nutrition from mother to the fetus is carried by a endocytosis. Nutrition from mother to the fetus is carried by endocytosis. Teratogenicity मतलब क्या है? What do you mean by teratogenicity? If drug is given in a pregnant woman, drug given in the pregnant woman, and if it affect the fetus, अगर fetus जो है, बच्चा जो है, child जो है, if it affect the fetus in terms of growth and malnutrition, in terms of growth, either physical growth or mental growth, ये physical growth को भी affect कर सकता है and mental growth को भी affect कर सकता है. If drug is given in a pregnant woman, if affect the physical or mental growth of fetus, then it is known as a teratogenic drug. It is known as a teratogenic drug, right? So I have told you the example, thalidomide is there, ethanol, alcohol is there, sulfur drugs are teratogenic in nature, barbiturates are there, phenytoin is there, anesthetic are there, all anti-cancer drugs are teratogenic in nature. Okay, all anti-cancer drugs are teratogenic in nature. याद रखना है आपको. I hope I am audible to you. 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 You are able to see the screen. You are getting my voice properly. चलो देख लेते. During the stages which, okay, during the stages during which a teratogen show the fetal abnormalities. देखो मतलब कौन से स्टेज के ऊपर ड्रग्स अफेक्ट कर सकते हैं बच्चे को. तो if a pregnant woman takes a drugs, or if a pregnant woman has been prescribed with the drugs, so drugs can affect at a what stage and what will be the effect of that. So that is a nothing but the stages during which teratogen shows the fetal abnormality. तो जो भी ड्रग्स है जो बच्चे के लिए हार्मफुल है ना, प्रेग्नेंट वुमन में ले लिया, बच्चे के ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, या फिर बच्चों के मेंटल कंडीशन के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, या फिर बच्चों के मेटाबॉलिक कंडीशन के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे टेराटोजन. टेराटोजन एक्चुअली दिस टर्म वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ये जो टेराटोजेनिक वर्ड है टेराटोजन है ना, दिस वर्ड टेराटो, this word terato means ghost. It is nothing but the ghost. Terato means ghost or jinn. What terato means ghost or jinn. तो देखो ये बच्चे भी कैसे लग रहे हैं, कुछ भूत जैसे लग रहे हैं ना. Terato means ghost or jinn. So teratogenicity is, it is a term, or teratogens is a term which was obtained from a Greek word known as teratos, means ghost. So those compounds which produces a abnormal growth or condition in the fetus, if they are used in the pregnant woman, known as a teratogen, right? तो देखो the period, significance and harmful effect. क्या लिखा है यहाँ पे? Period, then significance and harmful effects. So if any ladies takes, or if any pregnant woman, or if any pregnant woman takes a teratogenic drug, अगर pregnant woman में teratogenic drug यूज किया, कब? In the first 2 weeks of pregnancy. पहले 2 हफ्ते के प्रेगनेंसी में अगर कोई teratogenic drug यूज किया, या फिर कोई teratogenic drug प्रेस्क्राइब किया उसको डॉक्टर ने, तो पहले 2 वीक का जो टाइम होता है, so first 2 weeks it is a period of fertilization and implantation stage. तो ये पहले 2 जो हफ्ते होते हैं, इट इज अ पीरियड ऑफ इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन स्टेज. तो इस टाइम पे अगर कोई टेराटोजेनिक ड्रग ले लिया, तो इफ एनी टेराटोजेनिक ड्रग इज टेकन विद इन 2 weeks ऑफ प्रेगनेंसी, if any drug is taken, if any teratogenic drug is taken within a 2 weeks of pregnancy, that leads to miscarriage. ये हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा? मिसकैरेज है ना. अभी 2 वीक भी हुआ नहीं प्रेगनेंसी को, और आपने कुछ एंटी कैंसर ड्रग खा लिया या फिर कोई टेराटोजेनिक ड्रग ले लिया, दैट कैन कॉज मिसकैरेज. दैट इज हार्मफुल इफेक्ट. So if a ladies, or if a pregnant woman, or if a mother is prescribed with any drug which can cause, which is a teratogenic, in a 2 to 8 weeks, 2 से लेके 8 हफ्ते का जो पीरियड होता है, 2 to 2 weeks
2 to 8 weeks ऑफ प्रेगनेंसी इज अ पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। तो 2 से लेके 8 हफ्ते में क्या होता है भाई, वहाँ पे ऑर्गन्स जनरेट होते हैं, मतलब जो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है, वहाँ पे उसके ऑर्गन्स बनने चलेंगे विद इन 2 to 8 weeks। तो इट इज अ पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। अगर इस पीरियड में अगर कोई टेराटोजेनिक ड्रग ले लिया, सो व्हाट विल दैट कॉज, दैट कैन कॉज दिस इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट इज अ क्लिप्ड प्लेट है ना, फर्स्ट टेराटोजेनिक इफेक्ट क्लिप्ड प्लेट और ऑप्टिक एट्रोफी और मेंटल रिटार्डेशन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो सबसे पहले देखो क्लिप्ड प्लेट क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय क्लिप्ड प्लेट, क्लिप्ड प्लेट है ना। क्लिप्ड प्लेट क्या होता है, सो यू माइट हैव सीन, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, देखो आप ऑब्जर्व करो, कुछ लोग जो होते हैं, कुछ जो लड़के लड़कियां होती है, उनका जो लिप्स है, उनकी जो लिप्स है वो ब्रोकन होते हैं, बीच में कटे हुए होते हैं। कुछ लोगों के लिप्स जो है ना बीच में से कटा हुआ होता है, अपर लिप उसका बीच में कटा है, तो उनका मुंह ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो क्लिप्ड प्लेट इज नथिंग बट द टेराटोजेनिक इफेक्ट। देयर इज अ breakdown, there is a partition between the upper lip है ना। कुछ देखो पेशेंट के जो अपर लिप है ना टूटा है, क्यों टूटा है, दैट इज नोन एज क्लिप्ड प्लेट इफेक्ट। तो लॉट ऑफ ड्रग्स कॉजेज द क्लिप्ड प्लेट एज अ टेराटोजेनिक इफेक्ट, ठीक है, वो है वो। देन ऑप्टिक एट्रोफी मतलब क्या, कुछ लोग जो है ना, कुछ बच्चे जन्म से ही क्या होते हैं, अंधे होते हैं। ऑप्टिक एट्रोफी मतलब वे ब्लाइंडनेस, ऑप्टिक एट्रोफी मतलब ब्लाइंडनेस। some child, after some child right from the childhood they are not able to see anything ना, blind रहते। then mental retardation, neural tube defect क्या है, so it is nothing but the faulty formation of spinal cord। आपको जो spinal cord है वो faulty बन जाएगा, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। 8 वीक ऑनवर्ड्स, अगर 8 हफ्ते के बाद है ना, 8 हफ्ते के बाद है ना, सो 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑनवर्ड्स, if a mother takes any teratogenic drug, so it affects, okay, because 8 weeks is ना 8 weeks onward, 8 हफ्ते के बाद में कौन सा पीरियड होता है, after 8 weeks onward there is a growth and development of fetus in the mother। so in that period if any mother takes teratogenic drug, there is a developmental and functional abnormalities, right? So this is nothing but the stages during which teratogen show the fetal abnormality। मतलब कौन से स्टेज में कौन सा abnormality, कौन से स्टेज में कौन सा abnormality दिखाता है टेराटोजेनिक ड्रग। तो अगर पहले 2 वीक में प्रेगनेंसी के टेराटोजेनिक ड्रग ले लिया, तो वो पीरियड किसका होता है, दैट पीरियड इज ऑफ फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन। इसमें अगर ड्रग ले लिया तो क्या करेगा, मिसकैरेज करेगा। 2 to 8 वीक्स का ऑफ प्रेगनेंसी, ये 2 से लेकर 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, उसमें अगर कोई टेराटोजेनिक ड्रग ले लिया, ये पीरियड किसका होता है, दिस पीरियड इज फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस। यहाँ पे अंग बनेंगे बच्चे के, ठीक है। अगर इन दैट पीरियड इफ देयर इज अ टेराटोजेनिक ड्रग टेकन, दैट इज द क्लिप प्लेट, ऑप्टिक एट्रोफी, मेंटल रिटार्डेशन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। 8 वीक्स ऑनवर्ड, 8 हफ्ते के बाद की प्रेगनेंसी, 8 वीक्स ऑनवर्ड 8 हफ्ते के बाद की प्रेगनेंसी, उसमें भी द पीरियड इज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसमें कोई टेराटोजेनिक ड्रग ले लिया, तो दैट कैन कॉज डेवलपमेंटल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहा है आपको। Are you getting my points? Are you getting my points? Are you getting my points? Please write in the comment. Are you getting my points? Next is the blood-testis barrier. Blood-testis barrier. So whatever drugs goes into blood that will not enter into testis। हर एक जो ड्रग्स है मतलब जो भी केमिकल्स है, वो जो ड्रग आप लेते हो, केमिकल्स लेते हो, हर एक केमिकल टेस्टिस में जाएगा, ये कंपलसरी नहीं है।
Why? Because in the testis you have blood testis barrier. Now blood testis barrier is made from a Sertoli cells junction. के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Sertoli cells. It is a Sertoli cell junction and it is not a capillary endothelium. ये capillary endothelium barrier नहीं है. The barrier, blood testis barrier is made from a Sertoli cell junction and it is a tied junction between two Sertoli cells. It acts as a blood testis barrier. है ना. Otherwise जैसे है ना कुछ ड्रग्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल एंटी कैंसर ड्रग्स, दे causes the inhibition of spermatogenesis. You know that anti-cancer drug will cause spermatogenesis, inhibition of spermatogenesis. So likewise that. So drugs may affect the your sperm count or spermatogenesis. That's why blood testis barrier is there, which will prevent reaching a drug into a testis, right? So distribution is इसमें भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो जाते हैं. नाउ very important point, distribution is permeability rate limited. Distribution is permeability rate limited in case of ionic or polar or water soluble drug. अगर कोई ड्रग वाटर सोल्यूबल है या फिर पोलर है या फिर आयनिक है, इन दिस केस डिस्ट्रीब्यूशन इज अ परमेबिलिटी रेट लिमिटेड. मतलब वो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वाटर सोल्यूबल ड्रग है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन डिसाइड करता है? वाटर सोल्यूबल ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कौन डिसाइड करता है? उसकी परमेबिलिटी. Permeability rate limited in case of water soluble or ionic or polar drugs. So distribution is a permeability rate limited in case of ionic, polar or water soluble drug. तो water soluble drug है, ionic है, polar है या फिर है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन डिसाइड करेगा? उसकी परमेबिलिटी, कितना परमिएबल है टिश्यू में, राइट. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ परफ्यूजन रेट लिमिटेड. ये दोनों भी लाइन के ऊपर एज इट इज क्वेश्चन आ चुके हैं. Distribution is a perfusion rate limited. क्या है? Distribution is a perfusion rate limited in case of lipophilic drug. जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड है? परफ्यूजन मतलब क्या? इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द पर्टिकुलर टिश्यू. रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू. ब्लड फ्लो कितना हो रहा है? Rate of blood flow to the tissue that decide the distribution of lipid soluble drug. ये दोनों भी लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्ट्रीब्यूशन इज अ permeability rate limited in case of water soluble drug. Distribution is a perfusion rate limited in case of lipid soluble drug. Very important. Okay. Next, what is the perfusion rate? Perfusion rate के ऊपर भी GPAT 2018 में क्वेश्चन आया है. मतलब ये तीनों लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. Perfusion rate is nothing but the volume of blood that flows per unit per time. Volume of blood that flows per unit per time, unit volume to a tissue. That is known as the perfusion rate. Volume of blood that flows per unit time per unit volume to the particular tissue, known as a perfusion rate. That is a ml per minute per ml. इसको बोलते हैं अपन perfusion rate. That will again come to you when we will discuss the cardiovascular chapter. Cardiovascular system में ये perfusion rate फिर से एक बार आएगा आपको. Now volume of distribution क्या है? Volume of distribution is nothing but the, मैंने बोला है पहले, volume of distribution is nothing but the hypothetical volume of body fluid into which drug is dissolved or drug is delivered or drug is distributed. So hypothetical volume of body fluid containing a drug known as a वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एपरेंट वॉल्यूम, यहाँ पे दो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं डेफिनेशन में. एक सिंपली वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड दूसरा होता है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? कि ऐसा एज्यूम किया है, ऐसा कंसिडर किया है बाय एज्यूमिंग दैट drug remains in the blood, by assuming that drug is concentrating in the blood.
and okay, drug is concentrated into blood and it is equally distributed to all compartment. ऐसा assume करने के बाद apparent volume of distribution, that is nothing but the amount of drug in the body, total amount of drug in the body divided by plasma concentration, that is known as the apparent volume of distribution. ठीक है, now volume of distribution equal to x divided by c. x क्या है, x मतलब आपका x नहीं है या फिर आपकी x नहीं, x मतलब है total amount of drug in the body divided by plasma concentration. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुके हैं. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम से कम 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 3. नेक्स्ट, हायर विल बी द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोअर विल बी द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन. हायर विल बी द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोअर विल बी द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एंड वाइस वर्सा. मतलब अगर कोई ड्रग है ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसी ड्रग का, किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, लार्ज है, हायर है, लार्ज है या फिर हायर है. कोई ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लार्ज है या फिर हायर है, उसका मतलब क्या है, ये ड्रग क्या है कि टिश्यू में गया है, टिश्यू. So if drug is having higher volume of distribution, that means drug is distributed into the tissue. जो भी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है उसका मतलब ये ब्लड में कम, बाकी टिश्यू में जाता है. नाउ इफ ड्रग इज हैविंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज लो, है ना, किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कम है, मिनिमम है. लेस और मिनिमम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स ड्रग इज प्रेजेंट इन द ब्लड. अगर ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो उसका मतलब ये होता है कि ड्रग कहाँ पे है, ब्लड में है. तो इफ ए ड्रग इज हैविंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेस, इफ ड्रग इज हैविंग लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स ड्रग इज प्रेजेंट इन द ब्लड ओनली, क्योंकि एक ही कंपार्टमेंट में पड़ा है ड्रग. इफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज लार्ज और हायर, ड्रग इज हैविंग हायर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टिश्यू. If drug is having low volume of distribution, that means that drug is present in the blood. Okay, so higher will be the volume of distribution, lower will be the plasma concentration and vice versa. ये लाइन पूरा ये एक्सप्लेन किया है. Volume of distribution is low when a high percentage of drug is bound to plasma protein. Volume of distribution कम होगा कब, जब ड्रग प्रोटीन को बाइंड करेगा. When drug will bind to a plasma protein, volume of distribution will become, for example drug है आपका warfarin. Warfarin has a very less apparent volume of distribution than true volume of distribution. This relationship is used to calculate, this relationship can be used to calculating the volume of distribution by using dose only if one knows or one can calculate the concentration. ठीक है, तो देखो टिश्यू बाइंडिंग एंड accumulation of drug with a high volume of distribution give rise to the possibility of displacement by another agent that will change the pharmacological and therapeutic effect. मतलब अगर दो ड्रग्स है, कोई ड्रग है ज्यादा प्रोटीन बाइंडिंग करता है, ये टिश्यू बाइंडिंग करता है या फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग करता है, दो ड्रग है, दोनों भी क्या करते हैं, प्रोटीन को बाउंड करते हैं. तो एक ज्यादा एफिनिटी है, एक को कम है, तो है ना, तो दोनों अगर जाएंगे तो एक को हकल देगा. दैट कैन रिजल्ट इन द टिश्यू टॉक्सिसिटी, दैट कैन रिजल्ट इन द ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, तो नोन एज अ प्रोटीन बाइंडिंग इंटरेक्शन और प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन. तो टिश्यू बाइंडिंग एंड accumulation of drug with a very high volume of distribution give rise possibility to the displacement by another agent, and that can change the pharmacological activity as well as toxicity, right? Now very those drug which binds selectively to plasma protein,
अगर कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करता है तो दोज ड्रग which selectively binds the plasma protein they will less bound to the tissue. अगर कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करता है तो उसका मतलब ये है कि बाकी टिश्यू को कम बाइंड करेगा. If drug binding to plasma protein that means it will less bind to the extravascular tissue. For example है उसको warfarin. Warfarin has a less apparent volume of distribution than true volume of distribution. Warfarin is a 99% protein bound. Warfarin is a 99% protein bound drug. Warfarin is a 99% bound to the plasma protein because it has a very less volume of distribution. क्यों? कि पूरा के पूरा ड्रग ब्लड में है. प्लाज्मा कहाँ पे? प्लाज्मा मतलब ब्लड. प्लाज्मा में प्रोटीन है. तो अगर कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करता है उसका मतलब वो होता है कि वो ब्लड में ही है, बाहर नहीं गया. नाउ इन दिस केस अगर टॉक्सिटी होता है तो डायलिसिस करके आप ड्रग को रिमूव कर सकते हो. तो दोज ड्रग विच आर हैविंग हाई प्रोटीन बाइंडिंग they can be effectively removed by dialysis, blood dialysis. But those drug which binds to the tissue, they are present in the tissue, not in the blood. अगर कोई ड्रग है, for example, those drug binds to the extravascular tissue, they less bind to the plasma protein. So those drug which binds to extravascular tissue, मतलब कोई ड्रग अगर लीवर को बाइंड करता है, कोई ड्रग अगर किडनी को जाके बाइंड करता है, कोई ड्रग आपके लंग्स को बाइंड करता है, कोई ड्रग आपके एडिपोज टिश्यू या फिर कोई बोन को बाइंड करता है, दैट मीन्स दोज ड्रग विच बाइंड्स टू द एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू दे विल हैव लेस बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन एंड दे विल हैव वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर एग्जाम्पल एक क्लोरोक्विन. क्लोरोक्विन क्या है? क्लोरोक्विन. कौन सा क्वीन? क्लोरोक्विन. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. क्लोरोक्विन. Chloroquine has a high volume of distribution. Chloroquine has a high volume of distribution. Chloroquine has a high volume of distribution and it is nothing but the 1300. इसको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1300 लीटर. क्लोरोक्विन हैज अ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. क्लोरोक्विन हैज अ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. कितना है? 1300 लीटर, 1300 लीटर. Chloroquine has a high volume of distribution, 1300 liter. So it is present in the extravascular tissue, not in the blood. So chloroquine क्या करता है? It is binding to the retina. ये आपके आईज में रेटिना होता है, उसको बाइंड करता है. So it will bind to retinal cell and will cause retinal pigmentation. Retinal pigmentation. So chloroquine has a higher volume of distribution. And now in this case, drugs which binds to the extravascular tissue, so dialysis is not effective. अगर ब्लड है ना, अगर ड्रग का टॉक्सिटी हो गया, अगर वो ड्रग प्रोटीन को बाइंड करता है, अगर आपने ड्रग ले लिया, ज़्यादा ओवरडोज हो गया, लेकिन वो ड्रग क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड करता है, राइट? मतलब वो ड्रग कहाँ पे? आपके ब्लड में ही है, ठीक है. सो अगर उसका टॉक्सिटी हो गया तो आप डायलिसिस करके ब्लड को रिमूव कर सकते हैं. बट सपोज आपको टॉक्सिटी हो गया ड्रग विच बाइंड्स टू द एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू, जो ड्रग एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू को बाइंड करता है उसको कैसे निकालेंगे? बिकॉज वो ब्लड में है ही नहीं. वो कहाँ पे है? वो तो जाके टिश्यू में है. कौन सा टिश्यू में? लिवर में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, या फिर ब्रेन में हो सकता है, या फिर आपके एडिपोज टिश्यू में हो सकता है. तो दोज ड्रग विच बाइंड्स प्लाज्मा प्रोटीन they can be easily removed by dialysis. Those drug which binds to extravascular tissue, they are not removed by dialysis, right? Next part, relative volume of different organs, blood flow, their perfusion rate at a basal condition to total body volume is 70 liter. तो total body volume होता है 70 liter, है ना, in terms of volume. तो body has 70 liters. Now relative volume of different organs, हर एक organ का relative volume है ना. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है कि बाबा हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन कौन है?
और मॉडरेटली परफ्यूज्ड कौन है और पुअरली परफ्यूज्ड कौन है। तो क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन कौन है, मतलब सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो किसको जाता है ना। सो डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन, डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन, दे आर क्लासिफाइड इनटू, depending upon the blood flow to the organ, they are classified into three types, है ना, highly perfused organ, then moderately perfused organ and poorly perfused organ. So highly perfused organ, moderately perfused organ and poorly perfused organ. So what are the highly perfused organ? देखो lungs, then kidney, then adrenal gland, then liver, heart and brain. So most of the blood will go to these things, with these organs. So they are known as highly perfused organ, right? So you can see over here. So यहाँ पे देखो 100% cardiac output goes to your lungs. So 100% cardiac output out of your cardiac output, 100% cardiac output will go to the lungs. मतलब सभी blood lung को जा रहा है. 20% of cardiac output will go to the kidneys. Okay. 0.5% cardiac output will go to the lungs and 27% cardiac output will go to the liver. 4% cardiac output will go to the brain, heart and 14% cardiac output will go to the brain. मतलब है ना, lungs, then liver, then brain and kidneys. Lungs, kidneys, liver and brain, they are known as a highly perfused organ. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Most of the body's cardiac output will go into the these organs, right? है ना. परफ्यूजन रेट भी दिया है. परफ्यूजन रेट यहाँ पे 10.2 ml blood per minute per ml. 10.2 ml per minute per ml blood go to the lungs, है ना, वैसा है. Then moderately perfused organ, muscles and skin. मसल को कम ब्लड जाता है ना, muscles and skin. Moderately perfused organs, so 20% of cardiac output will go to the muscle and 7% cardiac output will go to the skin. So they are known as the moderately perfused organs. And lastly देखो poorly perfused, मतलब इनको बहुत ही कम ब्लड फ्लो जाता है. poorly perfused organs. So example is a adipose tissue. कौन सा टिश्यू? adipose tissue. And second होता है bone. So in the adipose tissue देखो only 4% of cardiac output that goes into the adipose tissue. Only 4% of cardiac output go to the adipose tissue and 5% goes to the bone. So bones and adipose tissue, they are a poorly perfused organ. Muscle and skin are a moderately perfused organ. Lungs, kidney, liver, heart, brain, adrenal glands, they are known as a highly perfused organ. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको याद रखना है. देखो जीपैट में इसके ऊपर भी जीपैट 2022, जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर, सबके लिए क्वेश्चन आता है. जीपैट 2022 में क्वेश्चन आ चुका है इस टेबल के. देखो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स ऑफ ए 70 kg अडल्ट. एक अडल्ट जो होता है 70 किलोग्राम का अडल्ट, उसमें कितने कंपार्टमेंट है? बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट. तो देर आर 3 body fluid compartment measure. So and their volume, their body weight, their total body water. ठीक है. देखो 70 kg man has a 3 major fluid compartment. पहला होता है आपका vascular fluid और प्लाज्मा. क्या है पहला? vascular fluid और प्लाज्मा, मतलब ब्लड वेसल, मतलब ब्लड है ना. vascular fluid है ना, vascular fluid, इट इज अ ब्लड और प्लाज्मा. तो vascular fluid, तो कितना लीटर ब्लड होता है ह्यूमंस में? सो ए 70 kg adult have 6 liters of blood, 6 liters of blood, okay, and 3 liters of plasma, right? And so total percentage of body weight, so 70 kg का पर्सन है तो उसमें क्या 9% क्या होगा? ब्लड होगा. टोटल बॉडी वेट कितना है उसमें? 15%. एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा
मतलब एक्स्ट्रा मतलब बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर का फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा इसमें नहीं धरना है, प्लाज्मा इसमें नहीं कंसिडर करना है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा, तो देयर इज अ 12 लीटर्स, ठीक है, 17% ऑफ बॉडी वेट एंड टोटल बॉडी वाटर इज 28%, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर का फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्सक्लूडिंग ब्लड सेल्स, आरबीसी में कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो इट इज अ 24 लीटर्स, टोटल परसेंट ऑफ बॉडी वेट 34 एंड टोटल बॉडी वाटर 57, है ना। तो सबका मिला के 100% टोटल बॉडी वाटर होता है। और सबसे ज़्यादा टोटल बॉडी फ्लूइड कितना होता है, 42 लीटर्स, टोटल बॉडी फ्लूइड इज 42 लीटर्स, ठीक है। तो जीपैट 2022 में कौन सा क्वेश्चन आएगा, जीपैट 2000, there was a question in the GPAT 2022. The question was this: the volume of intracellular fluid excluding blood cells. Volume of intracellular fluid excluding blood cells is, तो उसका आंसर दिया था 23 लीटर, उसका आंसर दिया था 23 लीटर। This was a question in GPAT 2020. Volume of intracellular fluid excluding blood cells is, ये GPAT 2022 में आएगा, याद रखना। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्लड टोटल है ना, टोटल फ्लूइड कंपार्टमेंट कितना है बॉडी में, टोटल फ्लूइड कंपार्टमेंट होता है आपका 42 लीटर्स, है ना। मतलब टोटल फ्लूइड कंपार्टमेंट रेट 42 लीटर्स, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इससे ज़्यादा होगा या नहीं होगा, तो थ्योरेटिकली नहीं होना चाहिए। बट सम ड्रग्स आर हैविंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन दिस, सम ड्रग्स आर हैविंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन टोटल बॉडी फ्लूइड, सम ड्रग्स आर हैविंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन टोटल बॉडी फ्लूइड, है ना, इसकी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट यू कैन सी, I hope I am audible. तो आई थिंक लाइव में अभी बच्चे नहीं है, तो आई विल एंड दिस सेशन, विल सी द टुमारो, सी द टुमारो, पॉइंट्स विल टेक पार्ट टुमारो।